Hello dear friends. Today we will be talking about article number 1 of Indian Constitution. As you all know that in polity article 1 is the most important if we talk about any of the exam, right? Especially if you talk about UPSC, article number 1 holds importance. So today we will be talking about article number 1 in detail, right? So stay with me and understand article number 1 so that anytime in future you need not to refer to any other source, and this lecture is complete when it comes to article number 1. Now, when we talk about article number 1 of Indian Constitution, it talks about the name and the territory of union. हमारा जो यूनियन है यानी इंडिया जो है, इंडिया से रिलेटेड नेम टेरिटरी इस कंटेक्स्ट में बात करता है आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now, when you read article number 1 of Indian Constitution, it says article number 1 में 3 क्लॉज है, 1, 2, 3. पहला क्लॉज बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो इसमें दो चीज बताया. पहली बात तो इंडिया का नाम इसने स्पेसिफाई किया, इंडिया दैट इज भारत, दिस इज द नेम, ऑफिशियल नेम ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड, इंडिया दैट इज भारत. दूसरा इसने बताया कि इंडिया का नेचर कैसा है, तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. ये इंडिया का नेचर है. ठीक है, नेचर इन कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन, दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 1 के क्लॉज 1 में हमें दो चीज देखना होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. सेकंड क्लॉज है, ये कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे गए हैं. तो जो जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे जाएंगे उसको आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी मान लेंगे. ठीक है, एंड थर्ड बात करता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ states, the territory of a state, then the union territory is as specified in first schedule, and if any acquired territory, अगर कोई acquired territory है. हम इन सभी क्लॉज को एक एक करके समझेंगे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट दैट इज क्लॉज नंबर 1. क्लॉज 1 बात करता है पहला इंडिया दैट इज भारत की. जस्ट अ सेकेंड, इंडिया दैट इज भारत की. ठीक है, सो क्लॉज 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत. इंडिया दैट इज भारत. ठीक है, अब यहां दो क्वेश्चन निकल के आता है. सबसे पहली बात, दो नाम क्यों है, why we have two official name India and Bharat. तो इसके पीछे रीजन है क्लैश बिटवीन द इंग्लिश बेल्ट मेंबर्स एंड हिंदी बेल्ट मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये दोनों बेल्ट मेंबर्स लोगों का अपना डिमांड था. हिंदी बेल्ट मेंबर्स लोग कह रहे थे कि भारत इसका नाम होना चाहिए, वेर एज इंग्लिश बेल्ट मेंबर्स वाले लोग कह रहे थे कि इंडिया इसको कहना चाहिए. सो दे वांटेड टू रेफर दिस पीस ऑफ लैंड एज इंडिया. नाउ देयर वाज अ क्लैश. ये क्लैश को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू गो विद बोथ द नेम दैट इज इंडिया एंड भारत, एंड हेंस हमने दोनों ही नाम अडॉप्ट कर दिया एज एन ऑफिशियल नेम ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड दैट इज इंडिया एंड भारत. पहला चीज डन हो गया कि दो नाम क्यों है. सेकेंड चीज है कि भाई भारत ही क्यों, भारत ही क्यों. इंग्लिश में तो इंडिया आपको समझ में आता है, लेकिन हिंदी में भारत ही क्यों. आपके पास और भी कई नाम थे, लाइक हिंदुस्तान, लाइक जमुरा देश, लाइक आर्यव्रत. राइट, these are the different name by which you could have referred this piece of land, because these names were used somewhere in the past, ancient medieval age में ये different names इस piece of land को refer किया जाता था. then why भारत only? तो इसके पीछे दो रीजन है. सबसे पहली बात, अगर आप 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसमें मेंशन्ड है, वो है ऋग्वेद से रिलेटेड. देखिए क्या था कि जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट बुक है दैट इज ऋग्वेद. ऋग्वेद का 10th चैप्टर को आप रेफर करिए. इन दैट 10th चैप्टर दैट इज 10th मंडल, देयर इज अ मेंशन ऑफ 10 राजन युद्ध, यानी battle of 10 kings. Here the 10 different kings, they came to fight against the one tribal group that is Bharat tribe, which was headed by Suda. This particular fight is called as Dasrajan Yuddha. This battle took place on the bank of river Ravi. इसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेंशन्ड है. In this fight, Bharat tribe defeated all these 10 different tribes and they acquired their territory. Now Bharat tribe people, they started to live in the
entire North India, right? This North Indian area, that North India wala jo area tha, this entire came under the control of Bharat tribe. Now the people of Bharat tribe were residing on this piece of land. So whenever this piece of land used to be referred, the people used to say, we belong to the piece, we belong to Bharat Jan ki bhumi. So that piece of land was referred as a Bharat Jan ki bhumi, and धीरे धीरे उसे भारत की भूमि भी कहा जाता है. So this is one of the historical reason why we say call this particular piece of land as a Bharat, क्योंकि ऋग्वेद में इसके piece of land को as a भारत refer किया है. That means भारत is the oldest name जो अब तक हमने find किया है उसके accordingly. उसके बाद में जमुरा देश, ये देश, वो देश, अलग अलग नाम रेफर किया गया, but originally it was called भारत, मतलब सबसे oldest name है. सेकेंड, भारत नेम हमारे कल्चर के साथ भी इंटैक्ट होता है. हम कहते हैं कि भरत के पुत्र है हम, राइट? सो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उससे भी रिलेट कर देता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट भारत नेम एज अ हिंदी नेम फॉर दिस पीस ऑफ लैंड. ठीक है. सो इसके पीछे का दो रीजन आपको पता चल गया. एक तो 10 राजन युद्ध जो हम कहते हैं, 10 राजन युद्ध, राइट? About which it is mentioned in 10th mandal of Rigved. ठीक है, Rigved, and because of which it becomes the oldest name of this particular piece of land. oldest name है. ठीक है. और इसके अलावा this name also goes with the ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, राइट? हम भरत के पुत्र हैं तो भरत से वैसा भी नाम आ गया, तो ट्रेडिशनल आउटलुक को भी या ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को भी ये कवर कर लेता है. सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड दिस टू नेम, आई मीन दिस नेम दैट इज भारत. और पूरा का पूरा ये दो नेम क्यों अडॉप्ट किया गया है? बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन हिंदी वर्सेस इंग्लिश बेल्ट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, वी आर डन विद दिस. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, वो है आपका कि व्हाई वी कॉल इट यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है कि दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट, राइट? यूनियन ऑफ स्टेट. Now, in order to understand what is union of a state, we must first know what is federation of a state. तो हम दो चीज को पढ़ेंगे, एक union of a state and the other thing that we will be looking at is the federation of a state. So first you must know the federation. If you know federation, what is federation, then it will be easy for you to understand what is union. ठीक है? So now what is federation? Let us take an example of USA. See, we all know that there was no country called USA. Earlier there were different colonies, and the 13 different colonies, they came together to form a larger unit called America. ठीक है? So as we all know कि there were different colonies. These are the different colonies. Consider these are the different colonies like New York, California, है ना? These are the different colonies, right? ये different colonies या different states हुआ करती थी. These all states, they decided that dividedly or separately we are actually weak. Why not to come together and form the larger unit so that we get the strength and we can fight with any of the opponent if anyone tries to capture us on have the acquisition, हमें अगर में invade करना है तो. So all these different states, they came together and they formed the larger unit. मतलब ये different states लोग मिलकर एक country form इन्होंने किया. तो इसको country को मैं second लिख रहा हूँ because earlier states were existing. They came together and they formed the second big thing, that is, second thing, that is this big union. And they called this particular union as America, right? This is America. They named it as America, right? So states, they came together, यहाँ पर इकट्ठा आए और उन्होंने अमेरिका बनाया है. तो दे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है? सो फेडरेशन क्या होता है वो हम समझते हैं. पहले तो ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट स्टेट्स दे केम टुगेदर, दे फॉर्म द लार्जर यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Now, these states, they were having the authority to leave this union. अगर उनको अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि दे थिंक कि भाई नहीं, इस ग्रुप में, इस बड़े यूनियन में आने का कोई हमको फायदा नहीं हो रहा है, वी डिसाइड टू लीव, दे वर हैविंग द राइट टू लीव. दे कुड हैव मूव्ड आउट.
है ना, आउट जाना वॉज पॉसिबल फॉर देम. So such type of group where the members they have the authority to leave the group, such type of group is called confederation. So this was what? It was a confederation. So America was what? America was originally a confederation. Now, are you getting it? What is confederation? When smaller units they come and form a larger unit. But in this larger unit, the smaller unit they enjoy the authority to move out of the union, out of the larger unit. Then such type of group, yeah, such type of larger unit is called confederation. Take an example. हम सब लोग individual है. We come together. We form the WhatsApp group. Then WhatsApp group is what? It is nothing but a confederation. क्योंकि उसमें आप सबके पास पावर है कि आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन. नाउ अमेरिका में भी every states they had the authority to move out. So whenever the states are not happy with the union or with this group, they what they used to do, they used to leave this group. Now what happened during the time of civil war in America? Abraham Lincoln actually made all the state to sign the document where they decided or where they made a statement that they will not be leaving this group anytime in future. So जब ये इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि अमेरिका में हुआ था, दे साइंड एन एग्रीमेंट, यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में इन लोग ने बोला कि ये जो मूविंग आउट वाला हमारे पास पावर है ये हम गिव अप करते हैं. मूविंग आउट वाले को गिव अप कर दिया. दे गिव अप देयर अथॉरिटी टू मूव आउट, कि फ्रॉम राइट नाउ दे विल नॉट बी हैविंग द अथॉरिटी टू मूव आउट. जैसे कि हम सब लोग इंडिविजुअल है, हम सब लोग ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, राइट. उस व्हाट्सएप ग्रुप में यू ऑल हैव द अथॉरिटी टू मूव आउट, देन सच टाइप ऑफ ग्रुप विल बी कॉल्ड कॉन्फेडरेशन, ठीक है. बट आई डिसाइडेड दैट आई विल I will remove that option of moving out. Once you join this group, no one of you will have the authority to move out. Now, anyhow, whether you are happy, if you are not happy, whatever be the case, you have to be a part of this group. You cannot leave this group. So, the moment I remove that option of moving out, then this group becomes the federation, right? So, confederation में से जब moving out का option को remove कर दिया जाएगा, then this federation turns into a federation, ठीक है. So federation बनने का step आप देख रहे हो. First, the smaller units they exist. There was nothing called larger unit. The smaller units they came together. ये सभी लोग इकट्ठा आए and they formed the larger unit. So इसलिए मैंने second लिखा क्योंकि ये बाद में बनता है. And this larger unit को इन लोगों ने नाम दिया था अमेरिका, because United States, the states came together to form the larger unit, so they call it United States of America, ठीक है. And remember, such type of group is called confederation because here the members they have the authority to move out of the union, ठीक है. But the moment they give up by the means of agreement, they give up the authority to move out, then such confederation turns into a federation. So after civil war, या during the time of civil war, अब्राहम लिंकन के effort के वजह से अमेरिका confederation से एक federation में turn हो गया. So America became the federation. So America क्या है? It is a federation. What is it? It is a What is it? It is a federation. ये एक federation है और federation को हम बोलते हैं coming together model because the states have come together to form the federation ना. So this is what? This is coming together model. Coming together model. ठीक है जी? Is it clear? Coming together model अमेरिका है, ये इस हिसाब से बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है. Now moving towards union, India is not the federation, India is union. क्यों? तो again this इंडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? अच्छा देखिए, यूनियन होना या फेडरेशन होना, दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अमेरिका का ओरिजिन कैसा हुआ है? इट इज लाइक अ फेडरेशन, हैंस इट दे कॉल देमसेल्फ एज अ फेडरेशन. क्यों? द डिफरेंट स्टेट्स दे कम टुगेदर, दे फॉर्म द लार्जर यूनिट. दिस इज फेडरेशन, ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, did we any time in the past read about the different states coming together to form India? No. आप एंशंट एज में चले जाओ, आप मेडिवल एज में चले जाओ, आप कोई भी एज में चले जाओ, कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ो तो यू विल सी दैट दे मेंशन कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय दिस पर्टिकुलर किंगडम, दैट सदर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय XYZ रूलर,
western part was ruled by XYZ ruler, the eastern part of India was ruled by XYZ ruler. See, the India was whole, but the administration of different parts of India was under the control of different authority, different kingdoms. But still, from the ancient age, we refer this entire piece of land as Akhand Bharat was one whole India. So India has a concept where we say that India as a whole existed earlier, जिसका पहले से एग्जिस्टेंस हुआ करता था. इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, ये यूनियन वाला कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि इंडिया एज अ होल, इंडिया एज अ वन एग्जिस्ट करता है. इसमें हमने डिफरेंट स्टेट्स बनाया. आज़ादी के बाद से वी क्रिएटेड अ डिफरेंट स्टेट्स, we created different states. For what purpose? For administrative purpose. So यहाँ पर सी, यहाँ और वहाँ में कुछ फर्क होता है. इधर भी स्टेट्स है, यूनियन है, इधर भी स्टेट्स है, यूनियन है. बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, द आइडिया इज कि यूनियन डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर. व्हाट एग्जिस्टेड वाज द स्टेट्स, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनियन. वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में कहा जाता है कि स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ छत्तीसगढ़. वॉज देयर एनी छत्तीसगढ़ प्रायर टू 2000? 2000 से पहले छत्तीसगढ़ नाम का कोई स्टेट ही नहीं हुआ करता था. ये तो 2000 में बना. लेकिन क्या वो छत्तीसगढ़ का लैंड वॉज नॉट द part of India? Obviously, it was a part of India. That piece of land was not Chhattisgarh, but was India at that time, right? So यहाँ पर कॉन्सेप्ट है अखंड भारत, एक होल इंडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. इस वन इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. सो द लार्जर यूनिट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट? नाउ, because they did not come to form the union, they did not come ना, कोई आया और इंडिया को बनाया है वैसा नहीं है. इंडिया वन होल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कोई किसी के आने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं समझा जाता है. एंड बिकॉज दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट, they do not enjoy the right to go out. यहाँ पर बाहर जाने का राइट भी इन लोगों के पास नहीं होता है, राइट? So this is by the nature that they do not have the right to move out. This is by the agreement that they give up the right to move out. अब इन लोगों के पास भी बाहर जाने का right नहीं है, but because of agreement. यहाँ पर there is no such agreement. It is considered that it is because of the nature of India that it is not the formation of the different models or different states coming together and forming the union. This is not the concept here. The union existed prior. Everything was of the union from the very beginning. It has been divided into different states only for the administrative purpose. And because the states did not come, they do not have the right to move out, right? This is the concept. Now, ऐसे को कहा जाता है यूनियन. ये यूनाइटेड के ऊपर जोर नहीं देता है, ये यूनियन वन होल है, ये वन होल के ऊपर फोकस करता है, इसीलिए इसको यूनियन कहा जाता है. यहां पर भी स्टेट्स है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है. सो इंडिया का ओरिजिन इस तरीके का है. तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया इज ऑफ दिस टाइप, यूनियन ऑफ स्टेट. दिस इज फेडरेशन ऑफ स्टेट. ये वाले मॉडल को कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर मॉडल. होल्डिंग टुगेदर मॉडल, ठीक है. होल्डिंग टुगेदर मॉडल, यहां पर डिफरेंट स्टेट्स आर होल्डेड टुगेदर, राइट. यहां पर सभी लोगों को होल्ड करके रखा है, सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विथ इंडिया. यहाँ पर दे डू नॉट हैव द राइट टू मूव आउट बिकॉज स्टेट्स आर, स्टेट्स हैव नॉट कम टू फॉर्म द यूनियन. It has been created by the union, out of union reason for the administrative purpose, ठीक है. So this is all in context of what? This is all in context of origin, right? So article number 1 talks about the origin of India, कि India as per the origin या by the origin, what is it? It is federation or it is union. तो ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में इट इज नॉट द फेडरेशन बट इट इज यूनियन, ठीक है. सो फेडरेशन में और यूनियन में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा. फेडरेशन क्या है? डिफरेंट स्टेट्स या स्मॉलर यूनिट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर यूनिट. In this unit, the smaller unit, they had the power to move out. So such type of group is called confederation.
Confederation में by the means of agreement, when smaller units give up their right to move out, then confederation switch to federation. It turns into a federation. And remember, in federation, the states, yani smaller unit, they do not have the right to move out. This is the model of America. This is how America was created. तो अमेरिका अपने आप को लिखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नथिंग बट अ फेडरेशन, एंड सच टाइप ऑफ थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ coming together model. On the other hand, when you have one whole, the larger unit existing prior, and this has been divided into a smaller units for administrative purpose, such type of creation or such type of formation is called union of states. States यहाँ पर भी है, but ये united नहीं है, ये union है. In such type of model, states do not enjoy the right to secede the union, to move out of the union, because they did not come. तो जाएगा कहाँ से, आया ही नहीं तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है. Now, such type of model is called holding together model, ठीक है. अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर बट सिक्किम तो आया था, फिर वो जा सकता है ना. ये प्रैक्टिकली भले आया होगा, वो एक दूसरी बात है. इस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट किया है. बाय दिस कॉन्सेप्ट whosoever come, जैसे पानी में अगर आप चीनी मिला दीजिए, उसके बाद वो चीनी को आप अलग नहीं कर सकते, वैसा ही सिक्किम एक बार भारत में आ गया, घुल गया, उसके बाद आप सिक्किम को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज यूनियन ऑफ अ स्टेट, ठीक है जी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ मूविंग अहेड, When America created a federation, जब अमेरिका इन सभी लोगों ने फेडरेशन बना दिया, अब क्या हुआ देखिए. फेडरेशन बनाने के बाद में they decided कि भाई we will have certain principles by which we will be running our country. They created the country, this country was formed. Now they wanted to set up certain principles based on which the country need to be executed, right? इसको पूरा का पूरा operate किया जाएगा. So they form certain principles and they call these principles as a federal principles. Federation है, तो this is what? Federal principles. इन्होंने जो principles बनाए, these principles are called federal principles. मतलब whenever you find the federation, you will find these things, right? Like for example, first they said we will be having the written constitution. Written constitution, ठीक है? Written constitution. So this is the first principles of federation. Anywhere in the federation you will find what? You will find written constitution. Why? So that both the set of government या both the level of government will be working according to that written constitution. ठीक है? अगर verbal form में constitution होगा, तो there is a chance that both the level of government, central level की government and state level की government, दोनों अपने ही तरीके से काम करेंगे, and there will be a clash. For such clash not to happen, it was decided that they will be having the written constitution. ठीक है? First thing. Second thing is, और सेकेंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी कि जब ये फॉर्म होता है ना, उसी टाइम पे एक इवेंट ऑफ क्रिएशन, मतलब दे फॉर्म द बॉडी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडिंग द मॉडल फॉर बोथ द सेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम. That means both the set of government are within this constitution. No one is above the constitution, that no one will work according to their own wish or will. Now they all have to operate according to the constitution, so that there is no clash, so that there is a smooth operation of both the government, and finally the welfare of the people could be done very easily. Okay? So the second important principles they set up was the supreme constitution. Supreme constitution, ठीक है जी. This is second thing. Third, they said that भाई अपना जो constitution होगा must be rigid. When we say rigid, it simply means that in order to amend that constitution, there is certain special procedure that need to be followed.
And obviously, in this special procedure, both the party, that is center and the state, they both participate, right? That means by the joint effort of center and state, the constitution can be amended. It is not that one single party will do whatever they want. Nahi. So this is rigid constitution. Remember, rigid does not mean that the constitution cannot be amended. It can obviously be amended, but in order to amend such constitution, both the party need to come together, that they both need to come on the table. And second, there are certain special procedure that need to be followed in order to amend the constitution. So फेडरल में बिकॉज दो पार्टी है, दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को कंसीडर करना है, तो इसको रिजिड बनाकर रखना जरूरी है. तो दे डिसाइडेड कि देयर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. दे विल बी हैविंग अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ देन दे सेड कि भाई वी विल बी हैविंग अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अच्छा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होगा? बिकॉज अगर कोई भी सेट ऑफ गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, राइट, या फिर कोई भी सेट ऑफ गवर्नमेंट ओवर रीच कर रही है इनटू द स्पीयर ऑफ द अदर गवर्नमेंट, देन देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट टू लुक इनटू एंड मेक द एडजुडिकेशन एंड ये सारे जो भी प्रॉब्लम है उस सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके. ठीक है, सो दैट शुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नो जुडिशरी शुड बी अंडर, the judiciary should not be under any of the government. It should be independent. ठीक है. So the fourth important principle, anywhere you will find the federal principles, there you will find these principles, because these are the fundamental principles of the federal thing, right? So the fourth is independent judiciary. Independent judiciary. ठीक है, judiciary, right? And see, from very beginning we are saying that there are two set of government, both the set of government has to work according to the constitution, both the set of the government must participate whenever we want to amend the constitution. Judiciary is not within any set of the government, it is an independent body. So what we are talking, two set of government, then dual government. Anywhere wherever there is a federal principles, there you will find the dual government, union government as well as the state government. ठीक है, दो सेट ऑफ गवर्नमेंट. और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर. मतलब यूनियन लेवल पे, लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में वी हैव टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा यूनियन लेवल पे आता है और राज्यसभा जो होता है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है. ठीक है, तो स्टेट आल्सो हैव द रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. सो दिस इज व्हाट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज. इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर यू हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट. राज्यसभा इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, कैमरल legislature. ठीक है जी. So these are the principles which they formed for the functioning of their country, that is America, and they called these principles as a federal principles. इसके अलावा और भी होता है, लेकिन these are the very important fundamental principles when it comes to federation, right? And this is what federal principles. Now इंडिया में आ जाइए. इंडिया का क्या है? इंडिया ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस वी हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो. अच्छा, इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इन इंडिया? यस वी ऑल नो, राइट. थर्ड, is Indian constitution a rigid constitution? See, it is a blend of rigidity and flexibility. We have both the set of thing, that is certain provisions of the Indian constitution are rigid, certain provisions are flexible. But yes, we have rigid section, right? So we can say here that we have the rigid section as well. So we are rigid constitution, not completely, but yes, we are rigid to some extent. Then fourth, is judiciary independent in India? Yes, we know that Indian judiciary is independent, right? Do we have the dual set of government? Yes, we have the central government, we have a state government, we have both the set of government. Now, is there a bicameral legislature in India? Yes, we have a bicameral legislature in India, right? So we have all these principles which are called federal principles, right? But we have certain other principles which are not federal
but unitary. Like we have the concept of single citizenship, we have single constitution, one constitution, right? We have all India service ka concept. What are these? These are nothing but the unitary provisions. So we also have the unitary provisions, right? So we have federal principles and we have unitary principles both. Remember, now we are talking about in context of administration, right? Administration. So origin, अमेरिका का ओरिजिन आपने देखा, ओरिजिन इज फेडरेशन. सो अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंगली इन लोग ने एक प्रिंसिपल्स बनाया, दैट इज फेडरल प्रिंसिपल्स. इंडिया का ओरिजिन कैसा है? यूनियन. बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया को लगा कि भाई हम ओरिजिन हमारा कैसे भी हुआ, बट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन वी विल पिक अप ऑल दोज प्रिंसिपल्स विच आर प्रोमिनेंट, विच आर एक्चुअली डूइंग गुड इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So we adopted certain federal principles, we adopted certain unitary principles. So remember, when it comes to operation, when it comes to administration, India is not union, India is federal. But because we have unitary principles as well, we call it क्वासी फेडरल. मतलब फेडरल जैसे है, एग्जैक्ट फेडरल नहीं है. एग्जैक्ट फेडरल होता कब? जब हमारे पास यूनिटरी फीचर नहीं होता. सो वी आर नॉट 100% फेडरल, बट वी आर क्वासी फेडरल. सो इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट आर वी? वी आर क्वासी फेडरल. फेडरल, सॉरी, फेडरल. ठीक है, क्वासी फेडरल. सो आई होप यहां आपके पास क्लियर हो चुका होगा. आर्टिकल 1 में क्या था? यूनियन, सॉरी, इंडिया दैट इज भारत, ये नाम है. हर एक कंट्री का एक ही नाम होता है, बट फॉर इंडिया वी हैव टू नेम. द रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी बेल्ट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंग्लिश बेल्ट मेंबर्स दे वर सेइंग इंडिया नाम होना चाहिए, हिंदी बेल्ट मेंबर्स दे वर सेइंग भारत नाम होना चाहिए, बिकॉज देयर वाज अ क्लैश at the very beginning with respect to the name. Ultimately it was decided that we will be adopting both the name so that this clash can be sought out and we can proceed with the making of the constitution. ठीक है? So both the name was adopted. Now why Bharat? Because इसका historical aspect भी है. भारत tribe वाला जो कहानी हमने अभी पढ़ा था, दसराजन युद्ध से related, and second it also relates with the cultural aspect of India कि हम भारत वंश के हैं, भारत के पुत्र है, इस तरीके का जो concept है, even it refers with that. And remember, Bharat is the oldest name of this piece of land. So because of this, the two name was adopted. Then same in article number 1, clause 1, we have another very important thing, that is union of state. Now, union of state is what? It is the nature of India in context of origin. Preamble में इंडिया का नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दैट इज इन केस ऑफ ऑपरेशन. इंडिया कैसा है? इंडिया का नेचर वैसा है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया का नेचर इन कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन, वी से इट इज यूनियन ऑफ स्टेट. अब यूनियन ऑफ स्टेट कैसा? तो आपने देखा, यूनियन ऑफ स्टेट समझने के लिए यू मस्ट नो द फेडरेशन ऑफ स्टेट. फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? Different states, yani smaller units, they come together to form the larger unit, and the smaller unit, they enjoy the authority to move out of this larger unit if they find not interesting to be a part of this larger unit, right? Such type of larger unit is called confederation, and by the means of agreement, when a smaller unit, they give up the authority to move out, they give up their right to move out, then such group turns into a federation. Confederation, federation ban jata hai. America was originally a confederation, but अब्राहम लिंकन के एफर्ट के बाद में उन्होंने जब सभी स्टेट से साइन करवा लिया इस तरीके का डॉक्यूमेंट, देन अमेरिका टर्न्ड इनटू अ फेडरेशन. फेडरेशन इज कॉल्ड whole this one coming together model. It is coming together, or federation जब भी होगा तो people will be using the word United States, right? जैसे UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 डिफरेंट किंगडम्स थे, वो सभी इकट्ठा हुए एंड दे फॉर्म द कॉन्फेडरेशन. देन देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट दे विल नॉट बी मूविंग आउट, देन दे टर्न्ड इनटू अ फेडरेशन. जहां पर भी फेडरेशन होगा दे विल बी यूजिंग द वर्ड यूनाइटेड. ठीक है? यूनाइटेड नेशन, अगेन वो क्या है? वहां पर भी डिफरेंट स्टेट्स लाइक इंडिया, अमेरिका,
साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान जैसे सभी स्टेट्स लोग इकट्ठा हुए एंड दे फॉर्म द लार्जर यूनिट जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। अब इस यूनाइटेड नेशन में से सभी लोग स्टेट्स के पास ये राइट है कि अगर वो यूनाइटेड नेशन छोड़ना चाहते हैं तो दे कैन मूव आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन इज अ कॉन्फेडरेशन। राइट नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स कि अगर उन लोगों को उन लोग छोड़कर नहीं जा सकते, यू हैव टू गिव अप द राइट टू मूव आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन, इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं है। सो यूनाइटेड नेशन हैज नॉट टर्न्ड इनटू अ फेडरेशन, इट इज स्टिल अ कॉन्फेडरेशन। ठीक है, सो दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन हाउ अमेरिका इज क्रिएटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का क्रिएशन कैसा है? मानते हैं कि यूनियन इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता है, अखंड भारत पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमने छोटी 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 स्टेट्स बनाई है। क्यों? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, डेवलपमेंटल पर्पस, दीज आर द डिफरेंट रीजन फॉर विच द स्मॉलर यूनिट्स आर क्रिएटेड। नाउ फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, देर वॉज नो तेलंगाना बट वी क्रिएटेड तेलंगाना फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। देर वॉज नो छत्तीसगढ़ या झारखंड और उत्तराखंड prior to 2000, but we created these states for again for the administrative and the developmental purpose. ठीक है, so this in India, in the model which India has, in Indian concept we have that larger unit exists from early. The smaller units have been created for the administrative purpose. Now here the smaller units, they do not have the right to move out by the nature of this origin, because they did not come, because of the nature ही कहा जाता है कि the smaller units they do not have the right to move out, and such type of model is called union. यहाँ पर भी states है तो इसके लिए union of states, and this model is called the holding together model. This is of इंडिया, इंडिया इज ऑफ दिस टाइप। अमेरिका ऐसे फॉर्म हुआ, इंडिया ऐसे फॉर्म हुआ। अमेरिका के फॉर्म होने के बाद में दे क्रिएटेड अ प्रिंसिपल्स वेयर दे मेंशन दैट दे विल बी हैविंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ड्यूअल गवर्नमेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेशन एंड मेनी मोर। दीज आर द 6 very important principles when it comes to federation, right? So America, by origin it is federation, and they follow the principles which is called federal principles. On the other hand, when we talk about India, India follows all these federal principles. So by origin India is union, India is not a federation, but still India follows the federal principle in its administration because these are the successful models of successful principles. So India administration में federal था, लेकिन इंडिया सिर्फ फेडरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, इंडिया ऑल्सो फॉलोज द यूनिटरी प्रिंसिपल्स. सो बिकॉज वी आर नॉट ट्रूली फेडरल, हैंस वी आर कॉल्ड द क्वासी फेडरल. वी आर व्हाट? वी आर क्वासी फेडरल स्टेट्स. ठीक है. नाउ अमेरिका में एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड. नाउ अमेरिका में एक और चीज है कि states they do not have the right, we are talking about America, right? States they do not have the right to move out. इन लोग move out नहीं कर सकते, यानी secede नहीं कर सकते, right? They cannot go out, move out नहीं हो सकता, right? नहीं जा सकते. But during the time of agreement, when the states said that we give up the right to move out, at the same time again one more point was there, that means one more provision is there in this agreement, that the area of a state cannot be decreased, increased, or it cannot be altered. यानी states को भी आप break नहीं कर सकते. अमेरिका न्यूयॉर्क जैसा था वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता कि न्यूयॉर्क के एरिया को तोड़कर किसी और स्टेट्स में डाल दिया, है ना. द स्टेट्स आर आल्सो नॉट डिस्ट्रक्टेबल. सो हियर इट इज सेड दैट स्टेट्स विल नॉट मूव आउट, बट एट द सेम टाइम स्टेट्स की जो खुद की टेरिटरी है, टेरिटरी इसको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, राइट. यानी कैन यू सी, states cannot move out, that means union is undestructible, but state की territory को भी disturb नहीं किया जा सकता, that means states are also indestructible. Hence we say America क्या है? America is indestructible union. Union of indestructible states. ठीक है.
वहां पर क्योंकि स्टेट्स मूव नहीं कर सकते, स्टेट्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ यूनियन, हैंस इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। स्टेट्स ही जब नहीं जाएगा तो जैसा यूनियन वैसा ही हमेशा रहेगा, वो टूटेगा नहीं। ऐड हो सकता है लेकिन कोई जा नहीं सकता, जाने पर हम बोलते हैं कि इट इज डिस्ट्रक्टेड, सो इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, सो इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट इवन द स्टेट्स का एरिया को तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता, तो इवन द स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। सो अमेरिका क्या है, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। वेयर when you talk about India, when we talk about India, इंडिया में क्या है कि स्टेट्स मूव आउट नहीं कर सकते, स्टेट्स कैन नॉट मूव आउट, मूव आउट करने का राइट इनके पास नहीं है, राइट और बिकॉज स्टेट्स मूव आउट नहीं कर सकते, सो कैन वी से दैट इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन कभी टूट ही नहीं सकता बिकॉज कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बट क्या स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एग्जिस्ट करती है? डू द स्टेट एंजॉय द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? नहीं, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, अलाउड है। इसीलिए तो बिहार से तोड़कर झारखंड बना दिया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड वी क्रिएटेड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ वी क्रिएटेड, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना वी क्रिएटेड। व्हाट इज दिस? द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। व्हाई? बिकॉज द स्टेट डिड नॉट कम, है ना, और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो एग्रीमेंट, सो इट इज मतलब कैसा है, आंध्र प्रदेश भी तो क्रिएट हुआ है भाई, तेरे को भी तो तोड़ के ही क्रिएट किया है मद्रास प्रोविंस में से, तो तुझसे तोड़कर तेलंगाना क्रिएट कर दिया, दिस इज पॉसिबल। सो इन इंडिया द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, सो वी से इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, टेबल स्टेट, ठीक है ना, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। दिस इज आर्टिकल नंबर 1। हमने आर्टिकल नंबर 1 का क्लॉज 1 एक तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज दिस वन, द क्लॉज इट सेज, द सेकंड क्लॉज सेज जितने भी स्टेट्स हैं एंड जितना भी उसकी टेरिटरी, मतलब स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ऑल दिस थिंग दे विल बी मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। द स्टेट्स and the territory thereof shall be specified in the first schedule. All the states and their territorial extent, everything is mentioned in first schedule of Indian Constitution. So pick up the, take out the bare act, and in that go through this first schedule of Indian Constitution. You will find that all the states and the territorial extent, everything is mentioned in first schedule. ठीक है? Then Article 1 का clause number 3 talks about the territory of India. It says that Indian territory comprise of all the territory of states. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं इनका टेरिटरी, प्लस यूनियन टेरिटरी विच आर मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, ऑल दोज यूनियन टेरिटरी, उसका area, and if any acquired territory, if there is any territory which is acquired by India which has not been yet specified as a union territory or a state, such type of territory का भी area को include कर दिया जाएगा इंडिया में. So India comprise of, so whenever you say India, जैसे कि हमको पता भी है इंडिया अगर हम बोलेंगे, if I say this is India, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से अच्छे से समझ लियो. ठीक है, इफ दिस इज इंडिया, सो इंडिया का एरिया कंप्राइज ऑफ व्हाट? स्टेट्स की एरिया, यूनियन टेरिटरी की एरिया, एंड इफ एनी एक्वायर्ड टेरिटरी. फॉर एग्जांपल इफ वी एक्वायर वन टेरिटरी, यहाँ पर एक पीस ऑफ टेरिटरी है, इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है. अभी तक इसको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जैसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, येट नॉट स्पेसिफाइड, बट इंडिया हैज एक्वायर्ड, तो इवन सच टेरिटरी विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. This is not key unless we specify it as a state or union territory. Till that time, you know, this area will not be considered to be India. nahi, this will be considered to be India. ठीक है. So
This is what article number 3 of Indian constitution, article number 1 का clause number 3 talks about India. ठीक है, so article number 1 is actually very important when it comes to exam, and article 1 में भी जो clause 1 है और उस clause 1 में भी very important is union. Remember, दिस यूनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता. वी लुक सिमिलर लाइक अमेरिका. अमेरिका में भी स्टेट्स है, यूनियन है. इंडिया में भी स्टेट्स है, यूनियन है. तो सभी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता कि इंडिया इज सिमिलर लाइक अमेरिका, दैट मीन्स इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरेशन. फॉर दिस कंफ्यूजन नॉट टू टेक प्लेस, the B.R. Ambedkar, he specifically mentioned union in article number 1 of Indian Constitution. He highlighted the term union, right? इसको स्पेसिफाई करने के लिए. एंड सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन टर्म यूज नहीं किया है, सो दैट आपको कंफ्यूजन कभी ना हो जाए कि इंडिया इज अ फेडरेशन. इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, राइट? अच्छा, मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ. दिस इज कि आपने ये सुना है फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरल, एंड देन वी सेड फेडरल प्रिंसिपल्स. बोलिए फेडरल प्रिंसिपल्स. और एक होता है फेडरल रिलेशन, रिलेशन, राइट? ये फेडरेशन, फेडरल प्रिंसिपल्स मान लीजिए, principles. Now, is India a federation? The answer is no. India is not a federation. Remember, when you say federation, this is in term of origin. Origin के हिसाब से India is not a federation, right? Now, India is not a federation in terms of origin. Now, principles के हिसाब से, do India follow a federal principle? Yes, we do follow the Indian federal principles. ठीक है? So India is a federation. अगर आप कभी term use करेंगे ना, तो federation generally union के context में, origin के context में होता है, तो India is not a federation, but India follows a federal principles. So India is federal in administration. We follow the federal principles. So we are federal when it comes to administration. एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है? और बिकॉज वी हैव फेडरल प्रिंसिपल्स, बिकॉज वी फॉलो दिस, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? और टू सेट ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या द रिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल रिलेशन. रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज व्हाट फेडरल रिलेशन. whenever, इसीलिए जब भी फेडरल रिलेशन की बात होती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. वी आर फेडरल इन ऑपरेशन, वी आर नॉट फेडरेशन इन ओरिजिन. आर्टिकल नंबर 1 हमारे ऑपरेशन की बात नहीं करता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करता है. इट टॉक्स अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन, और इसीलिए हाईलाइट किया है यूनियन, गलती से भी आपको फेडरेशन ना लगे. सो विद दिस वी कंक्लूड आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप you understood everything. If you find anything difficult, do let me know. Do comment in the do write in the comment section. And if you find this video interesting, so please hit the like button. Till then, goodbye. Take care. Thank you.